an act of charity, of course. So like she was like कि मुझे कोई बात मत कर लेना, नहीं तो अभी के अभी चाटा मार दूँगी. You got to remove it. No, I'm not gonna handle all this. We won, of course. Makes sense, because I'm damn sure you do not know all these things. So that's it for today's video, and I'm super hungry. Hello guys, and welcome back to my channel. This is Divyanshi Sharma here, and if you're watching my channel for the first time, so like, share and subscribe to my channel because you can do it. So please do it as an act of charity, of course. So let's begin with today's video, because today is a very good story time video and you are gonna absolutely love it because I'm saying it. And I absolutely love the response to the previous video, this one. तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं ये पहन के घूम रही थी. वाई आई एम नॉट वेयरिंग इट राइट नाउ, बिकॉज मुझे इसकी वजह से एक ब्रूस आ गया है मेरी एंकल पर, बिकॉज ऑफ विच आई कैन नॉट वेयर इट एनी मोर बिकॉज इट्स हर्टिंग सो बैडली. और अब मैंने ये भी बांध लिया. क्यों बांधा है? क्योंकि 2-3 दिन से मेरा हाथ दुख रहा था, तो आई वॉज लाइक लेट्स रैप इट अप. हाँ, तो ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, बस दुख रहा था मेरा हाथ, तो मैंने बांध लिया बिकॉज दर्द हो रहा था मुझे. सो या लेट्स बिगिन विद द स्टोरी कि हाउ आई गॉट द worst experience of my life. So yeah, let's begin. So guys, if you know कि मैं 2-3 महीने पहले मैं अपनी नाना नानी के घर गई थी. So let me tell you, मेरे होम टाउन में ना कि एयरपोर्ट वगैरह नहीं है. So of course जो मुझे अपने घर नाना नानी के घर जाने के लिए मुझे ट्रेन से जाना था. So अब हमारी ट्रेन जो थी वो थी सुबह से, एंड हम लोग रात में 3 बजे तक हम लोगों की पैकिंग वैकिंग चल रही थी और सुबह के 5-6 बजे हमारी ट्रेन थी. तो अब हम रात में लिटरली बहुत देर से सोए थे, एंड वी वाज लाइक कि हम वहाँ जाके सो जाएंगे. सो अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि पहली बात तो वी डिडंट गॉट द टिकट्स नाइस, बिकॉज पहली बात तो टिकट्स नहीं अवेलेबल थी हम लोगों के लिए, विच इज़ द सैडेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल एंटायर थिंग. बिकॉज अगर हम लोगों को बाकी कोचेज़ में अगर टिकट्स मिल जाते, so it would have been the best thing. But you know what, how I got this story? Because I got ticket in AC3. अब मैं बताती हूँ कि तुम लोग बोल रहे हो AC3 में ऐसी कोई बुराई नहीं है. आई लव AC3 पर्सनली, बिकॉज मुझे लगता है कि नो, आई डोंट लाइक AC3. आई कैन नॉट बी मोर जेन्युइन नाउ, सॉरी. आई पर्सनली डोंट प्रिफर AC3. आई लाइक AC2 मोर, ठीक है, because it has curtains. Makes no sense, but yeah, I like AC2 better. So we got ticket for AC3, and there were very few left. So we got literally, we all got, me, my mama and my sister all got middle seats. So as we enter the train, we see one lady there, and she is sitting there with a very arrogant face, like उनके मुंह में लिखा था कि मुझसे बात नहीं करना वरना मैं चाटा मार दूँगी. इट वॉज ट्रू, इट इज़ ट्रू. सो लेट्स कॉल दैट लेडी डाइट कोक, बट आई लव डाइट कोक एंड आई डोंट लाइक हर पर्सनली. सो आई विल कॉल हर मंडे, बिकॉज आई डोंट लाइक मंडेज. अब तुम्हें अगर मुझे ये भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि मुझे मंडे क्यों नहीं पसंद, देन यू आर द डम्बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ. सो वेयर आई वॉज दैट ये आंटी हम लोग को ऐसे देखती हैं. पहली बात तो फॉर सम रीज़न, व्हाट आई नेम्ड हर, आई नेम्ड हर मंडे. सो मंडे लुक्स एट अस लाइक वी आर सम पीस ऑफ थ्रैश. ओके, तो शी इज़ जजिंग एवरीवन इन द पर्टिकुलर कोच. ओके, एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो वो लिटरली एक अंकल से ऑलरेडी लड़ चुकी थी. लेट्स टेक हिज नेम एज एक्स. ओके, सो जो मंडे थी वो अंकल एक्स से लड़ चुकी थी, एंड बहुत ही अजीब से रीज़न के ऊपर शी रिएक्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, सो द रीज़न वॉज सो सिंपल, सो ट्रिवियल दैट यू डोंट इवन हैव टू रिएक्ट. आई मीन, नॉट इवन अ सिंगल सेन पर्सन वुड एवर रिएक्ट टू सच अ ट्रिवियल थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जो अंकल एक्स थे, उन्होंने अपना ब्रीफ केस, जो मतलब वो एक बैग लिए हुए थे, ऐसा ब्रीफ केस ही बोलते हैं शायद, उन्होंने उनके जस्ट बाजू में रख दिया. तो शी इज़ लाइक, you got to remove it. No, I'm not gonna handle all this. Ouch, I think I should stop moving this hand. So that auntie is literally like, no, you cannot do this, you have to remove it, I'm not gonna handle it, this is my seat. अब अंकल थोड़े से like he was a very aged person, so he was like okay, I'm removing it, and बहुत ही simply ये argument ख़त्म हो गई.
And after all this thing, we are like, okay, can you please move aside? We need to open the middle seat, okay? Because we were really tired. And she simply says sorry. Like the meanest sorry I have ever heard was this sorry. She literally says like, sorry. Like, woman, who are you giving these side eyes to? And don't you dare roll your eyes on us, because we are 3 people and you just one alone, Miss Monday. So this Monday woman is literally like, no, I won't let you open the seats and all. So we are just trying to persuade her that please let us open the seat. We are literally so tired, and we are also trying to make her understand our situation, that we are tired, we didn't sleep whole night, so we are actually we need sleep, we are not feeling good, we are tired. And she is not ready to accept the fact that we are genuinely tired, and it is a public transport. She does not want to comply to anything, and it was genuinely very rage baiting for me and very overwhelming for me, because what the hell, woman, why you don't want to comply? Like, are you mad? Are you mad, Miss Monday? But okay, let's go. So let's go to the another chapter where the fight gets steamy. Okay, so my sister is losing her will. Okay, she is like, please let us open it. And she's like, no, I won't. So the things got escalated, and my sisters said that आप हो गए morning person, हम नहीं है, and we wanna sleep, please let us open the. And she's like, no, I won't let you open it. And my sister is getting rage baited now. तो फिर इतना सोचने समझने वो समझ गई कि मिस मंडे समझ गई कि हम नहीं मानने वाले उनकी बात. तो शी इज़ लाइक, एंड यू नो व्हाट, एवरीबडी देयर वाज इन आवर सपोर्ट. सो शी वाज लाइक, ओ माय गॉड, आई एम गेटिंग सो मच प्रेशर. सो शी सेड द डम्बेस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड. She just said, see, I'm very tall, so I cannot just sit there like this, and I don't want to sleep also. And this is the rule of railways, that you cannot open seats after this particular time. Like, woman, do you know something about human decency and civic sense? Because I am damn sure you do not know all these things, and you do not deserve to travel in this public transport, because clearly you have zero civic sense. Then she is like, she started giving excuses on her height, that she's so tall, she won't fit under it, haha, weird shit. And my sister is getting totally rage baited. And then she says the word कि आप होगे, आप लंबे का हाइट का मुझे क्यों बता रही हो? आई एम ऑल्सो वेरी टॉल, एंड माई सिस्टर इज़ एक्चुअली मैं टॉल, नॉट वेरी, बट शी इज़ ऑल्सो टॉल. तो वो भी पता है उसको स्ट्रगल लंबे लोगों का. तो एंड शी गॉट रेज बेटेड, बिकॉज उनका पॉइंट ऑफ वैलिड नहीं है फॉर नो बडी देयर, एंड शी गॉट रेज बेटेड. Like, it's so ironic that the rage baiter of the room got rage baited, and it was super plastic thing there. Like, she was literally like, how dare you say that? You cannot say to me, yeah, yahi hota hai, blah 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 blah. And she kept on saying, बोली जा रही, भाई पागल थी वो औरत. She was literally, Monday was pagal. Monday got zero civic sense. Monday got zero sense also. Civic sense छोड़ो, sense भी नहीं था. Okay, and she kept on saying everything, and then for some reason she said like, ये आजकल की Gen Z, and we all were like, bro, calm down, you do not have to do all this. But अब जबकि उसने वो पूरे आ गई कि तुम कैसी हो, तुम्हें पता नहीं है दूसरों से बात कैसे करते हैं, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दिस. अब वो अपना एज कार्ड खेल रही है कि मैं बहुत बड़ी हूँ तुमसे, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो, ठीक है. तो देन एंटर्स माई मदर कि तुम मेरी बेटी के बारे में, क्योंकि माँ का दिल तो माँ का दिल होता है. तो माई मदर इज ऑल्सो लाइक, यू कैन नॉट टॉक टू माई डॉटर लाइक दिस, बिकॉज शी वॉज लिटरली गेटिंग आउट ऑफ हर लाइन. एंड उन्होंने तो इतनी गंदी बातें बोली थी. I cannot even say it because my channel is family friendly. And after all of this shit going over there, my mother came up and she is like, you cannot talk to me. And then she started fighting with my mother, the one who was lecturing my sister to see the age gap between both of them. Now she is fighting with my mother. Does that make sense? No, because my mother is also like older than her, of course. So if you actually believe, she just contradicts her own point, dumb woman. We won, of course. Fighting, then she's fighting with both of them.
Okay, and then she straight up went to like family things ki you are from low class family, you do not have any class, you don't know how to go, you are तुम गरीब हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसी फैमिली, तुम्हारा वैसा खानदान, दुनिया भर की घटिया चीज़ें बोलने के बाद एक अच्छे से प्यारे से भैया एंड ही इज लाइक ही ऑफर्ड his seat to her, so you can sit here and he will sleep. Okay, such a pooky man you are. I have huge respect for you bhaiya, whoever you are, but yeah, I have super respect for you. And you know what, she is literally sitting there and she is still blabbering, you do not have class, you do not bling, blah, blah, blah. भाई उसको पागल है, वो totally rage baited हो चुकी है. And you know what, she is giving me that constant look of disgust कि like what do you mean, why are you looking at me like you're gonna eat me up if I was not with my mother and sister. अब मैं बताती हूँ वो मुझे ऐसे क्यों देख रही थी. The reason behind she was looking at me like with that death stare is that because I was literally lying on the seat which was above her seat, the middle seat, and I was scrolling Insta. So I also looked at her like, I'm doing it, what are you gonna do? And she couldn't do anything, but she just gave me the weirdest and the most dirtiest and the most cringiest look ever, like type of shit. And I do not care what you think about me, woman, because I do not care about your opinion, because I already know your opinion does not matter, and your opinion is as low as your thinking, your mindset, and your filthy words. So that's it for today's video, and I'm super hungry. No, that's it for today's videos, and I'm super angry about the fact, and you can sense this video was not that fun video because I was totally rage baited and my hands and legs both are paining, so I cannot make this video so much fun for you guys. But please do keep watching this video because yeah, that's it for today's video. Actually, don't keep watching the video. That's it for today's video, guys. Like, share and subscribe to my channel. I am sorry, this is a very low class effort made from my side, but I assure you that the other videos I'm gonna post will be good, because I don't know why I'm even shooting it so badly. By the way, thanks for watching, guys. Bye bye.